अपनी यूपीएससी की यात्रा शुरू की और अभी आप यहाँ पे, तो हाउ वाज द जर्नी? मेरी यूपीएससी जर्नी काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई। मेरे पेरेंट्स सिविल सर्वेंट रहे हैं, तो मैं हमेशा से उसी की तरफ इंक्लाइन रहा हूँ। तो उसके बाद फिर जब मैंने ग्रेजुएशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ एक ऐसा एटमॉस्फेयर था कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर पाया यूपीएससी के लिए। फिर मेरे अटैम्प्ट्स चालू हुए, फिर जब मेरे इनिशियली सक्सेस नहीं मिली तो फिर मैंने स्टेट पीसीएस की तरफ रुख किया, उसमें मुझे सक्सेस मिली। फिर उसके प्रिपरेशन के दौरान मेरे आंसर्स में थोड़ी मैच्योरिटी आ गई और मेरे खुद के अंदर भी एक मैच्योरिटी आ गई। सो उसके कारण काफ़ी एडवांटेज मिला। और अब फिर 2 साल के बाद मैं फिर वापस यूपीएससी में आया हूँ, तो उसमें मेरा पहला इंटरव्यू कॉल आया। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। How was your English? It was very fine. I enjoyed the atmosphere there, and it was a very learning experience there. What sort of questions were being asked by the board? They are more of a discussion-based questions. They are not factual questions. They are, even since my hobby was sketching, so they told me to sketch. So it was an interesting experience. The questions were related to mostly my background in geography, and then some questions were related to IR. So they were a dynamic question. So would you talk about some of the questions from the IR specifically? Okay. So they asked me regarding CIS countries, Commonwealth of Independent States. They asked me regarding SAARC countries and the recent ASEAN, the big BRICS, and all these geo-groupings that are being formed. And they were also interested in Arctic nations and the recent Arctic global climate change phenomena. So they were these dynamic questions that were there. What was the question on the climate change? Climate change question was since Arctic is melting, so what are the positive and negative aspects that are visible out of that? What was your optional subject? So my optional and my graduation subject both are geography, so that is why they were more keen on that. What was your mode of preparation for this exam? Did you go for coaching, self-study, or mentorship program? I prepared in my home itself, and for this interview I did a few mocks, so that were helpful. And I also gave a few mock for my mains as well. So those are the helps that I have taken. What was your strategy for prelims, especially given the unpredictable nature of CSAT and maths? I have always been very comfortable with prelims. This was my 4th prelims and 4th mains, so I have never been out with prelims. So I am very comfortable with both CSAT as well as GS1. So how did you prepare for CSAT? I was always good in quizzing, so that was an added advantage. Secondly, I prepared for the factual aspects of it, and I always cover the current affairs with monthly magazines, so that helps me with that. And I have made notes for every subject, so that also helps it. And what was your strategy for the mains, given the fact that it's a 5 days back-to-back examination? So I have developed the main strategy over the period of 4 years since my UPSC journey. So initially it was more of a factual, but now I have added analytical aspects to it. So I have made my questions my answers more dynamic. So because of these mocks, they have helped me a lot. And gradually, even in my optional, they have helped me. So that has given me an advantage. How do you do the value addition? Okay, so value addition can be done by suggesting some measures. If the question is asking regarding some issues, so you have to give them some solutions of that. Or if that question is more general in nature, so you have to give more current affairs linkages with that answer. So it gives certain extra marks to that question. Given the time consumption that this exam takes, how do you keep yourself physically and emotionally? My family was a big support to me. My brother has came here as well. So my parents and everyone, they were supporting me. My friends were there. And even my colleagues in my training in Dehradun, they have helped me. So that has been a solid stone for me. What's your take on UPSC and mental health? Having a good mental health is the biggest advantage that you can have in a UPSC preparation, because the exam is such a lengthy process. It takes more than a year to prepare and get everything done. And there are ups and downs. Only 900 and 1,000 people, they get selected. So there will be failures, there will be successes. So you have to balance them. You don't have to be overjoyed with success and don't have to be more depressed because of failures. So you have to balance them.
अगर आप हमें अपनी यात्रा के बारे में आप बोलेंगे कि आपने कब अपनी यूपीएससी की यात्रा शुरू की और अभी आप यहाँ पे हो, तो हाउ वाज द जर्नी? मेरी यूपीएससी जर्नी काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई। मेरे पेरेंट्स सिविल सर्वेंट रहे हैं, तो मैं हमेशा से उसी की तरफ इंक्लाइन रहा हूँ। तो उसके बाद फिर जब मैंने ग्रेजुएशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ एक ऐसा एटमॉस्फेयर था कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर पाया यूपीएससी के लिए। फिर मेरे अटेम्प्ट्स चालू हुए, फिर जब मेरे इनिशियली सक्सेस नहीं मिली तो फिर मैंने स्टेट पीसीएस की तरफ रुख किया, उसमें मुझे सक्सेस मिली। फिर उसके प्रिपरेशन के दौरान मेरे आंसर्स में थोड़ी मैच्योरिटी आ गई और मेरे खुद के अंदर भी एक मैच्योरिटी आ गई। सो उसके कारण काफ़ी एडवांटेज मिला। और अब फिर 2 साल के बाद मैं फिर वापस यूपीएससी में आया हूँ, तो उसमें मेरा पहला इंटरव्यू कॉल आया। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। प्रीवियस अटेम्प्ट्स में कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स आपने किए जो इस बार आपने ध्यान रख के उन पे काम करके इम्प्रोवाइजेशन दिखाई? तो जैसा आपने कहा, वो वैल्यू एडिशन मेरा एक वीक पॉइंट था, वो मैंने काफ़ी सही किया। फिर मेंस में सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है आपका ऑप्शनल, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा करना पड़ता है, तो उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की। GS4 में मैंने काफ़ी मेहनत की, और उसके साथ साथ एस्से जो कि काफ़ी डायनामिक है, उसमें काफ़ी मैंने मेहनत की। ज्योग्राफी की बात करें, क्योंकि आपका ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी आपने कैसे की? और प्रीलिम्स में जो ज्योग्राफी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं उनको आपने कैसे टैकल किया और कहाँ से आते हैं? तो प्रीलिम्स और मेंस की ज्योग्राफी में बहुत डिफरेंस है। प्रीलिम्स की ज्योग्राफी तो आप बेसिक एनसीईआरटी से कंप्लीट कर सकते हो, बट मेंस में जो ऑप्शनल में ज्योग्राफी आती है, उसकी खासियत ये है कि उसमें क्वेश्चंस बहुत जनरल होते हैं। सो यू हैव टू मेक देम मोर ज्योग्राफिकली लिंक्ड। So you have to use theories, you have to use a number of example, current affairs, maps to make them more dynamic. So ये काफ़ी एक बड़ा रीज़न रहता है, काफ़ी बच्चे इसमें अच्छा नहीं कर पाते। और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा लोग लेते हैं, तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ता है अपने आंसर्स में। तो ये सारे डायनामिज़म और ये सब करके आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो ज्योग्राफी।